Yes. Good evening, everyone. So we are going to start with the lab session today. Yes, firstly, we'll finish the experiment which we started last time, and then we will discuss about the projects as most of you had confusions in that. Please mute yourself, everyone. Yes. What was the experiment which we were doing? So it was Monte Carlo simulations. We already did one problem, that how to compute the probability of head or tail using Monte Carlo simulations, right? So we know how that works. And the next experiment or the problem on which we were working was we need to compute the value of pi. And so I explained you a geometrical construction for this, that how we can estimate the value of pi using Monte Carlo simulation. So what we were doing essentially was, uh, if you draw a circle, right, and then you enclose it within a square, okay, then if you mark the radius, say this is the center of the circle, so this is obviously going to be 2r. So the side of square was 2r if the radius of the circle be r, right? And then we computed that area of square was 4r square and area of circle was pi r square. So if you divide these two, so you will get pi by 4 is equal to the area of circle divided by the area of square. So this way pi will be 4 times this ratio, area of circle and area of square. यहाँ तक clear है सबको? Is it fine up to this point? This is something we discussed last time. If anybody has doubt in this, then you can ask. Because I don't know how many of you did not attend the last lab. So if somebody was not there, so you can ask me that this part is not clear. So our problem is to compute the value of pi. So for that, we constructed this circle of radius r and enclose it within a square. So this way, as I have shown in the figure, so you can very much follow up this calculation, right? So now what is the next thing? So we got this pi is 4 times area of circle by area of square. So that means if you know this ratio, then you will be getting the value of pi. So using Monte Carlo simulations, we will be computing this ratio. And for computing this ratio, you do not need to individually calculate area of circle and area of square, right? क्योंकि अगर हमें area of circle individually ही calculate करना था, तो area of circle तो हमें पता है, सर्कल का एरिया इज पाई आर स्क्वायर. सो दैट मीन्स सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमें पाई पता होना चाहिए, बट दैट इज एन अननोन टू अस. Do not have this preconception in your mind that we already know the value of pi, but this question is, say we do not know what is the value of pi, so we want to evaluate that. So individually ये दोनों एरिया निकाल के आप रेशो निकालोगे, so that is just a meaningless thing to do because वहीं से हम आए हैं. So we are not interested in computing area of circle and area of square individually. Rather, we are interested in computing this ratio, right? So how we are going to do that? So that we need to understand. So for that, once again, you just look at our construction. Yeah, we have, say,
square. Okay, so let me just see. What will be the area of circle will be this much. This, obviously all of you can know what is going to be the area of the circle. So this is going to be the area enclosed by the circle. The blue one which I am marking, right? It's just like filling colors. Okay. And the other one, say this one, this complete is going to be the area of the square. So all of you can imagine that what is going to be the area of the square. So the ratio of that is going to be obviously the what is what you require. So here is an important thing which we can discuss, and that is that instead of looking at this complete circle and complete square, if we just look at one half of it, let me change the color of it. Yeah. So instead of just looking at the complete circle, you just look at one quadrant, right? Only this much. If you just focus on only this portion, this one, right? Only one square. Whichever quadrant you can choose means 1/4 of that. So the question is, will that ratio remains same? The area of circle by area of square. So if you take the total area of circle and divide it by total area of square, that ratio is 1. And another ratio is area of circle coming only in this first quadrant, and the square, area of square is also being considered coming only in the first quadrant. And it will always be same because they are ratios. Yeah, and this is because of the symmetry, right? Because we know that the circle, exactly the quadrant division has been done according to the center of the circle, and the same point happens to be the center of the square. So because of the symmetry, so अगर हम square को चार parts में divide करेंगे, so individually each square will have the same area, and similarly dividing the circle in 4 parts in this way is also giving me each individual एरिया इज सेम विच इज 1/4 ऑफ दैट. सो दोनों रेशियोज जो है हमारे पास 1/4 हो जाएंगे अगर हम सिर्फ एक क्वाड्रेंट पे फोकस करते हैं, बट ओवरऑल द रेशियो इज गोइंग टू बी सेम, राइट? So here we can simplify our problem, that instead of looking at the complete one, there is no problem in looking at the complete one, but it is just we are simplifying it one step so that our programming can be easier. बट लेटर ऑन जब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कोड कैसे किया है, तब आप पूरे सर्कल और पूरे स्क्वायर के लिए भी कर सकते हो. इट्स देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. It is just we are simplifying the problem only to this much part. So now I'm just having this much part of my square and the circle. So it's just this small quadrant, and somewhere this is the circular boundary, right? So this being the area of the circle जो एक quadrant में आएगा, and this total including the black and the red one, right? So that is going to be what is going to be there in the square part, means the square part is going to be red plus black. So area of circle will be the black region, and area of square will be the this black plus red. Now we are just focusing on this, right? Is this clear? Any doubts up to here? Can you please explain that pi is equal to 4 times of area of circle by area of square? इसके अंदर हम जो area of circle ले रहे हैं वो 1/4 ले रहे हैं खुद ही. अभी हम देखो, पहले हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया. लेट मी जस्ट इरेज दिस. यहाँ तक तो क्लियर था ना हमें? यहाँ तक तो क्लियर था ये फॉर्मूला कैसे आया? प्लीज म्यूट योरसेल्फ. यहाँ तक क्लियर है ना हमें कि ये कैसे आया फॉर्मूला? एवरीबडी इज क्लियर अप टू दिस पॉइंट?
So now you just forget about this pi and this 4. Now our total focus is just on this ratio. We want to somehow estimate this ratio. We are focusing only on that ratio, nothing else. वो जो भी आएगा हम उसको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और पाई की वैल्यू निकाल लेंगे, right? So this ratio I am focusing on the area of circle by area of square. So I am saying that total area of circle divided by total area of square, because whenever we write, what happened, because whenever we write areas, then I mean total area, right? But what I'm claiming right now, that instead of the ratios computing from the total areas, I can compute ratios of only 1/4 of both of them. So the ratio is going to be same area of circle in one quadrant. You understand the meaning of the quadrant, divided by the area of square in one quadrant. किसी भी क्वाड्रेंट में आप ले सकते हो. सो हमने क्या किया है, सेम क्वाड्रेंट जो है ले लिया है. नाउ यू आस्क इफ यू हैव एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट. टोटल एरियाज का रेशियो ले लो, चाहे सिर्फ एक क्वाड्रेंट के एरियाज का रेशियो ले लो, हाफ का ले लो, तो वो सेम ही रहेगा. बिकॉज सर्कल भी इक्वली क्वाड्रेंट्स में 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है और स्क्वायर भी क्वाड्रेंट्स में इक्वली डिवाइडेड है और ऑल पार्ट्स आर इक्वल. सो रेशियोज दोनों की सेम ही रहेगी. नाउ यू आस्क इफ यू हैव एनी डाउट. Yes, please tell if it is clear. Wait a minute, what happened? Yeah, it's fine. If you're not asking out, so I'll just assume that it is fine. So yeah, so now we are just focusing on 1/4 of this. So 1/4 को मैंने अलग से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है. तो ये इस तरह का पोर्शन दिखेगा आपको, बीच में से एक सर्कुलर आर्क, जो ये वाला पार्ट था, ये वाला रेड बाउंड्री, ये आपको नजर में आएगा यहाँ पे. तो इसमें हम सर्कल का एरिया निकालेंगे. सो दैट विल बी circle 1 will be this much only, क्योंकि circle का area means obviously interior of the circle, the area enclosed within the circle. So this is what area enclosed within the circle, so that will be the black one, right? While जब हम square की बात करेंगे, तो क्योंकि square तो ये पूरा ही है, so square is red one plus black one. As in square is not just the red one, but the square area will be the red one plus black one. Is it fine? So this further ratio becomes equal to the black area over black plus red area, right? Is it fine? Yeah. Okay, so we will now look at how Monte Carlo simulation is going to give us this area, the black one and the black plus red. Okay. Yeah, so let me just move ahead with this figure. Let me just erase rest of the things. Say, now this is our original formula, pi is 4 times, वो हम last में use कर लेंगे. But basically we need to just compute this one. So now let me see if I can draw this one in a better way. So here you have again, this is the circle. Okay, let me not draw it this way. You just understand it from here only, right? I'll be explaining you from here only.
how the simulation is going to help us. So what we are going to do, we will generate a point, because this is now on in a plane, in a two-dimensional plane. We are in a two-dimensional plane. So what do you mean by a point in a two-dimensional plane? It will have some x and the y coordinate. X and y coordinate, yes. Any other answer? So point means this only, that you have to mark a point. So by marking a point, I mean you should be able to tell that if I mark a point here, so you need to tell me its x value, x coordinate, as well as the y coordinate, right? So what we will be doing in MATLAB, we will be generate a point. So generate a point. Point means the random point, because that is what all the work of Monte Carlo simulation, कि हम random point generate करते हैं. तो point generate करने का मतलब है कि हमें दो numbers generate करने पड़ेंगे, x और y, because the point is of this kind, x and y. So what we need to do, हमें x generate करना है और y. So generating a point is equivalent to generate two random numbers. और अभी वी नीड टू डिफाइन द लिमिट्स, कि कहाँ से कहाँ हम उसको डिफाइन करें, कि कौन से इंटरवल पे हम अपना पॉइंट जनरेट करें. सो कैन एनीबडी टेल मी एनी वैल्यूज, हम कितना लेंथ ऑफ, क्योंकि स्क्वायर का लेंथ लेना हमारे उसमें है, बिकॉज इफ यू रिमेम्बर ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, पाई इज 4 टाइम्स, आई टोल्ड यू कि रेडियस का तो इसमें से रोल खत्म ही हो गया है. ओरिजिनली आर वाज कमिंग इनटू पिक्चर, बट जब आप रेशियो ले लेते हो तो आर का कोई सेंस नहीं रह जाता है, तो कितना भी रेडियस ले लो दैट विल वर्क. तो जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी वी विल टेक 1, राइट? अब 2 ले लो, 3 ले लो, वो बाद में आपको जब एज आई एम सेइंग एक बार कर लोगे तो उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. इट्स ऑलवेज गोइंग टू गिव यू द सेम आंसर, बिकॉज अगर बड़ा साइड ऑफ स्क्वायर लोगे तो उसमें सर्कल भी उतना ही बड़ा बनेगा, right? So radius is going to change both of them in equal magnitude, so ratio is still going to remain the same, क्योंकि r ने cancel ही हो जाना है. So just because just for simplicity हम इसको 1 ले लेते हैं, तो इसको हम 0 to 1 ले लेते हैं. That suppose we have a square here from 0 to 1, right? So the center of the circle is at 0, 0, because अगर ये 0 to 1 है, तो obviously देखो ये अगर पूरा सर्कल होता, हमने तो पूरा सर्कल नहीं माना ना, तो ये सेंटर ऑफ द सर्कल ही होगा और सेंटर ऑफ द स्क्वायर ही होगा. So this is 0, 0, be the center of the circle and radius be 1. So what we are doing, we are generating these x and y. X also belongs from 0 to 1 and y also belongs to the interval 0 to 1. Is it clear up to here? Yes, ma'am. Yeah, so now you have to tell me further. अब पॉइंट तो जनरेट हो गया, राइट? हमने पॉइंट जनरेट कर लिया. अब वो कहीं भी आ सकता है, क्योंकि x की वैल्यू 0 to 1 है, y की वैल्यू 0 to 1 है. तो सपोज पहली बार में पॉइंट आया 0.5, 0.5. एक रैंडम एग्जांपल दे रही हूँ, बिकॉज नोबडी नोज वो रैंडमली जनरेट होगा, तो कुछ भी जनरेट हो सकता है. सपोज एक पॉइंट जनरेट हो गया 0.5, 0.5. तो व्हाट यू विल क्वालिफाई फ्रॉम हेयर. जैसे अब ये डिसीजन है यहाँ पे, जैसे हम लास्ट टाइम कॉइन टॉसिंग का एक्सपेरिमेंट किया था, कि जैसे रैंडम नंबर जनरेट होता है, हम डिसाइड करते हैं उस रैंडम नंबर को देख के कि इसको हम हेड में काउंट करेंगे कि इसको टेल में काउंट करेंगे. Now we'll use the condition x square plus y square is less than or equal to 1. Yeah, so that means your deciding criteria should be whether it is lying inside the circle or it is lying outside the circle, because square के तो अंदर ही रहेगा वो point, because you see ये x और y दोनों 0, 1 है, तो ये 0, 0 होगा, ये point होगा 1, 0, ये point होगा 1, 1 और ये होगा 0, 1. तो अगर x y दोनों strictly from 0 to 1 है, तो obviously वो square के बाहर तो point जाने ही नहीं वाले हैं, जो जनरेट होंगे सारे के सारे स्क्वायर के अंदर ही रहेंगे, राइट? तो दैट मीन्स जितने भी पॉइंट जनरेट होंगे वो एरिया ऑफ स्क्वायर को तो कंट्रीब्यूट करेंगे ही करेंगे. तो हम इट्स समथिंग लाइक हम एरिया को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं पॉइंट से. तो जितने पॉइंट सर्कल के अंदर आएंगे वो उनको काउंट करेंगे, सो दे विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू द एरिया ऑफ द सर्कल, और जितने सर्कल के बाहर आएंगे दे विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू द आउटसाइड एरिया, दिस वन ब्लैक प्लस रेड जिसको हम बोल रहे हैं, the red area, right?
तो आपको बस एक ही डिसाइडिंग कंडीशन लगानी है कि अंदर है पॉइंट के नहीं है सर्कल की, क्योंकि अगर अंदर नहीं है तो ऑब्वियसली वो इधर है। दो ही जगह हो सकता है, या वो इस तरफ या वो इस तरफ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो बाउंड्री है सर्कल की वो वेल डिफाइंड है। सो वी नो दैट व्हाट इज दैट डिसाइडिंग कंडीशन, एज ईशांगी टोल्ड अस दैट सर्कल की इक्वेशन होती है हमारे पास x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज आर स्क्वायर। ए बी जो होता है हमारे पास सेंटर होता है, ए बी हमारा 0 0 है, रेडियस हमारा हमने 1 लिया है, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये सर्कल का बाउंड्री होगा। So your deciding condition is going to be, let me just erase this one, that if your point satisfies, if x square plus y square will be less than 1, then you count it inside the circle। अभी हमें काउंट करना है, तो फिर से वही जैसे पिछली बार हम हेड काउंट कर रहे थे, हेड का काउंटर लगाया था, और टेल काउंट कर रहे थे, टेल का काउंटर लगाया था, तो यहाँ पे भी आप इसको काउंट करोगे। सो काउंट इट इनसाइड द सर्कल। तो जो जो पॉइंट इस कंडीशन को क्वालिफाई करेंगे आप उनको अंदर काउंट कर लोगे। आप इक्वालिटी भी इसी में ले सकते हो, एज आई टोल्ड यू इवन द लास्ट टाइम, कि जो बाउंड्रीज होती हैं इस तरह में, जैसे हमने लास्ट टाइम 0 to 1 में 0.5 पे बाउंड्री रखा था कि जो 0.5 से कम है वो हेड है, 0.5 से ज्यादा है वो टेल है, या उल्टा है। बट एग्जैक्टली 0.5 पे क्या है, तो उसको आप किधर भी मान लो, इट विल रियली नॉट चेंज एनीथिंग, बिकॉज आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा है, तो वो रिलेटिवली एक पॉइंट से उतना फर्क नहीं पड़ेगा। सेम इज हियर, आपके एग्जैक्टली बाउंड्री पे प्रोड्यूस होने वाले पॉइंट बहुत कम होंगे as compared to the number of points which are going to be generated on this black side or the red side. So therefore it does not matter, आप ये equality चाहे पे जो आता है उसको circle के अंदर count करो या बाहर, it will really not matter. So once you get this, so you get the number of dots, the number of points generated inside the circle. So remember ये हमारा unknown था, black area over black plus red. So actually what you are doing, so black area over black plus red, क्योंकि एरिया उस उतना ही प्रपोर्शन होगा ना, जितना बड़ा एरिया है वहां पे पॉइंट्स ज्यादा फॉल करेंगे, जितना कम एरिया है वहां पे पॉइंट्स कम लाई करेंगे। so just imagine it like you have a board in front of you, जिस पे आप निशाना लगा रहे हो, it's you have a shooting board, right? There is some position where you want to place your darts inside, so you're shooting with a gun or howsoever you are aiming at your goals, but the number of times it will hit inside a particular region, तो जितना बड़ा एरिया मिलेगा तो चांसेस है वो उतनी बारी उस एरिया के अंदर जाएगा, और जितना एरिया छोटा होगा तो उतने एम्स आपके उस एरिया में कम हिट होंगे, राइट? assuming that you are giving a uniformly, you are hitting it randomly and uniformly. Okay, so that's how ये एरिया के प्रोपोर्शन होगा। जैसे लास्ट टाइम हमने 0.5 पे डिवाइड किया था, तो ऑब्वियस है कि ये इक्वल इंटरवल्स थे, तो जितने हेड्स, जितने पॉइंट्स इधर जनरेट होंगे उतने ही पॉइंट्स इधर जनरेट होंगे, तभी प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ आती है। अभी द सेम सिचुएशन यू कुड इमेजिन, अगर हम 0 to 0.8 लेते, मान लो कोई और एग्जांपल होता, 0 to 0.8 लेते एक इंटरवल और 0.8 to 1 लेते दूसरा इंटरवल, तो ऑब्वियस है इधर ज्यादा पॉइंट्स आएंगे, इधर कम पॉइंट्स आएंगे, बिकॉज ये बड़ा इंटरवल है। सेम इज हियर, ये ब्लैक वाला एरिया है जितना उसका प्रोपोर्शन है, तो वो उतने पॉइंट्स को कंट्रीब्यूट करेगा। so the black area or black plus red area is actually equal to the number of points in the black area, black area means inside the circle, and divided by black plus red। तो black plus red तो टोटल ही हो गया, उसमें आपको सेग्रीगेट करने की जरूरत नहीं है। so black plus red is just the total number of points, means your capital N, जितना आप सिमुलेशन ट्रायल्स रन करोगे उतना। तो आपको सिर्फ यही काउंट करना है, ये तो नीचे वाला नंबर तो वही है जितने आप एक्सपेरिमेंट्स रन कर रहे हो, जितने पॉइंट्स आप रैंडम जनरेट करा रहे हो। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। तो ये जो एरियाज की रेशो आ जाएगी, इसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज दैट्स व्हाट अवर फॉर्मूला वाज सेइंग, 4 टाइम्स दिस। सो ये इसको ही हम सिंप्लीफाई करके यहाँ तक लेके आए थे, ब्लैक ओवर ब्लैक प्लस रेड। सो जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय 4 टाइम्स, दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ पाई। So do this and let me know what values of pi you are getting, and if you have any confusion, so you can ask me any doubts.
Yes, Sumit, can you elaborate your question? मैम लाइक इसमें एन की वैल्यू क्या लेंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स? नंबर ऑफ पॉइंट्स वो मैंने स्टेटमेंट में बताया है, जैसे कॉइन टॉसिंग में भी हमने 10,000 लिया था, 10⁻⁷ भी ले लो, तो वही है, क्योंकि ये जो स्टोकेस्टिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, मोंटे कार्लो सिमुलेशन है, तो इसमें तो यू हैव टू टेक एज लार्ज एज पॉसिबल। आप जितना ज्यादा एन लोगे उतनी एक्यूरेसी आपकी ज्यादा आएगी। सो यू स्टार्ट फ्रॉम 100, then you get a value of pi, then you take n equals to 1000 or 10,000, then you will get another value of pi. So you can record different values of pi, and then you can actually see the accuracy increasing with increasing value of capital N, because you are correct in saying the number of points are infinite obviously। तो आप कितना भी कर लो, आप उसको कैप्चर नहीं कर सकते हो, बट एक्चुअली बिकॉज वी हैव दैट लिमिटेशन कि हमें फाइनाइट टाइम ही रन करना है, so it has to be as high as possible. So let me share that sheet with you, the file with where exact statement of this is written. I think I already shared that, but let me just open that file here. एक मिनट। Yeah, so this is the experiment we are doing. फर्स्ट पार्ट हम इसका कर चुके हैं, कॉइन टॉसिंग वाला। सेकेंड पार्ट है, इसमें मैंने 100,000 और 10,000 दिया है, so you can even take it to the next level depending upon how much computational time you are investing, and then compute the error in each case। मैंने बोला है क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई मैटलैब के पास है, तो आप एरर कंप्यूट करके क्वांटिफाई कर सकते हो कि कौन सी वैल्यू बेटर है। और मैंने आंसर आपको पहले ही बता दिया है कि 10,000 वाली विल बी ऑब्वियसली बेटर देन द अदर वन, बट एंड इवन इफ इट इज नॉट, सो आपको लग रहा है कि दैट इज ऑल्सो वेरी मच इनएक्यूरेट, सो यू हैव टू इंक्रीज योर कैपिटल एन। Excuse me, ma'am. Yes। Ma'am, we are taking like you considered a quadrant in a square, right? In the complete square. So can we take it as a whole circle and compute accordingly? यस यस डेफिनेटली, आप कुछ भी ले लो, आप कहीं पे भी, फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग सर्कल की इक्वेशन बदलनी पड़ेगी ना। Yes, ma'am. या फिर आप यही इक्वेशन लेना चाहते हो तो आपका पूरा सर्कल -1 to 1 Minus हो one से जाएगा। one लेंगे yes. हाँ, और स्क्वायर भी फिर या मतलब वो स्क्वायर भी उसी में कवर हो जाएगा, एक्स वाई दोनों -1 से 1 आएंगे। उसके लिए क्या है, आपको मैटलैब में वो कमांड देखना पड़ेगा। 0 to 1 वो डिफॉल्ट जनरेट कर देता है RAND लिखने से, बट -1 to 1 में अगर आप जनरेट करना चाहते हो तो फॉर दैट देयर इज अ स्पेसिफिक कमांड। वो हेल्प RAND करके देखो, आपको कमांड मिल जाएगा। Sure. Yeah, so all of you try this. It should not take much time, not more than 10 to 15 minutes, क्योंकि अगर आप पहला वाला एक्सपेरिमेंट आपको लास्ट टाइम समझ में आ गया था, कॉइन टॉसिंग वाला, so you should be able to do this also। आप स्टेटमेंट नोट कर लो। स्टेटमेंट नोट करने में कुछ नहीं है, सिर्फ n की 3 वैल्यूज हैं, 100,000, 10,000। I can share the other screen, means I can share the whiteboard where I have written all these things, so you can understand and let me know।
Okay, those if anybody has done this, so I'll see simultaneously. Let others do that. If anybody has not understood anything, then you can ask me, because this is the general technique. We have just done it for two examples, coin tossing and this pi value, but it has many, many applications. You can apply it on any system if you understand the dynamics of it, that you see no mathematical formula, equation, any numerical technique, nothing is being used in just making the program. The program is purely being written on what is exactly happening. That's why it's called simulation. कि आप इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करके आप मॉडल नहीं बना रहे हो उसका, आप डायरेक्टली डायनामिक्स को जस्ट कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिख रहे हो, राइट? उसको सिर्फ एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, बट nowhere, no other kind of approximation you are incorporating from your side. So the only approximation which is going on here is the round off error. जो computer can give rise to the round off error, MATLAB can give rise to that. And the other limitation is the finite number of iterations we are doing. And that also I've suggested you that if you run the number of trials beyond a particular number, you will start seeing the values coming out to be more accurate, more precise.
Okay, so those who have done can share their screen. Let me just stop share. Yes, Saurabh, you can share your screen. Yeah, it's correct, but area, do not write it area. Yeah, it's visible. Write its pi. मतलब हमने area नहीं निकाला है. Just write any other name for it. Pi approx. ये pi भी मत लिखो क्योंकि ये MATLAB का default pi का command है. pi. या सो दिस इज व्हाट. अब आप सेम डेटा में ना इसको 10 बार रन करोगे तो 10 बार ही अलग आंसर आएगा आपके पास, बिकॉज ये जो रैंडम नंबर जनरेशन का सीड है वो हर बार चेंज हो जाता है, so the sequence gets changed, so that's why different value comes even if you do not change anything. अब सेम एक्सपेरिमेंट को रन करो मैटलैब में, उतनी बारी कुछ एरर है वहां पे, so you will get the different value of pi. So even if with 10 raised to power 6, या एक तो n बड़ा ले लो और बड़ा ले लो, अभी भी it's not that much accurate. Say let's take 10 raised to power 7. Now you can compute the error. Absolute error between the actual value of pi and this pi approximate, because we just need to look at the magnitude of that error. So you can use the command of absolute. Yeah, so that's what I said. No? Still with the same n, you are getting now a smaller error. That's 4.31 into 10 to the power minus 4. You run it one more time. Let's see, it's going to change. Now this is 2 point something into. So obviously this is happening because that's how approximate it is. आप n और बड़ा ले लोगे तो probability is there that the accuracy will improve. Means it will definitely improve. क्योंकि इसको रन करने में तो कुछ भी टाइम नहीं लग रहा है. It's just even less than 1 second. So let's take 10 raised to power. My error is coming to be negative. Is it okay? हाँ, वो कोई फर्क, क्योंकि कई बार वो उसने इनएक्यूरेट देना है, कभी वो बड़ा देगा वैल्यू, कभी छोटा देगा, तो व्हाटएवर. Yeah, now it's going to take time. टेन raised to power 10 पे हैंग हो गया. ओके, यू टर्मिनेट कर दो उसको कंट्रोल सी से. कमांड विंडो में जाके जस्ट प्रेस कंट्रोल सी. 10 raised to power 8 और 10 raised to power 9 will be fine. In short, whatever I'm explaining, आप इसको बाद में वो भी करके देख सकते हो. So you just have got a general idea that this way you. Ma'am, 10 raised to power 9 पे भी हैंग है. मैम 10 के पास 7 पे आ रहा है लाइक आउटपुट 0.005. It's like मैम वो सिर्फ वो 1 सेकंड वाली कैलकुलेशंस कर रहा है. नहीं, ऐसा नहीं है. वो देखो टाइम ज्यादा लगेगा उसमें. ये टाइम लगेगा, वो हैंग नहीं होता है, इट टेक्स टाइम. अब क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा, अब आप देखो ना, उसको 10 फोल्ड इंक्रीज कर रहे हो उसकी कैलकुलेशंस को, तो अब ये लीनियर नहीं होता है कि अगर वो 10 सेकंड में आ रहा है तो 10 सेकंड, वो 1 में आ रहा था तो 10 में आएगा. एज यू कुड सी वी गॉट इन 32. सो ये एक्सपोनेंशियली रिलेटेड होते हैं जो टाइम, यू माइट हैव स्टडीड ऑल दिस, कि कैसे कैसे हम कंप्यूटेशनल्स बढ़ते हैं, तो they are not linearly increase नहीं होते हैं टाइम हमारे. So that's fine, but the you can see the error is still not very much less. It's still 0.002. But that's how, this is the fundamental method. अभी तो obviously और बहुत सारे you know algorithms हैं पाई की बेटर वैल्यू निकालने के लिए, but this was
how it was fundamentally introduced in the beginning. So इसलिए this was very initial application when Monte Carlo simulations was used. So that's why we are getting that. So is everybody getting this value? Whatever you are getting, just write that, because यहाँ पे we are not fighting for the accuracy. We are just learning. We are trying to learn how this Monte Carlo simulations is performed. Right? And one more thing, Saurabh, you can do, ये जो आप xi और yi आपने इंडेक्स दिया है ना इसको 7th और 8th लाइन में, ये मैंने लास्ट टाइम ईशांगी को भी बताया था, वी डोंट नीड टू स्टोर दीज वैल्यूज, उनको जस्ट इवन इफ यू राइट x एंड y और वो रीराइट होते रहेंगे, ओवरराइट होते रहेंगे, तो जितने हम एरेज और वेक्टर्स बनाते रहते हैं तो ऑब्वियसली दे टेक्स पार्ट ऑफ द मेमोरी, तो उतना ही वो टाइम कंप्यूटेशनल टाइम में ही ऐड होती हैं वो सारी चीजें, क्योंकि उसको स्टोर भी करना है एरे में। अब आपको ओवरराइट कराना है तो यू आर नॉट वरीड अबाउट स्टोरेज। ये छोटा प्रोग्राम है, यहाँ पे आपको ये कंपैरिजंस इतना इफेक्टिवली नजर नहीं आते कि टाइम पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ये चेंज करने से, बट फॉर बिगर प्रोग्राम्स ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं। 7 के लिए रन करोगे? ओके, मेरा 10⁹ 91 सेकंड्स में हो गया है। हाँ, मतलब वही वो हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, इट इज जस्ट क्योंकि वही आप स्टोर कराओगे तो देन इट इज प्रॉब्लम। नाउ यू कैन चेक दैट हमने 10⁸ के लिए रन किया तो 32 सेकेंड की बजाय अभी 14 सेकेंड में वी आर गेटिंग द आंसर। तो ये छोटी छोटी चीजें भी मैटर करती हैं। अननेसेसरी हमें स्टोरेज नहीं करानी होती है फालतू चीजों की, ना ही उनको प्रिंट कराना होता है। तो yeah, that's working fine. मैम आई हैव ऑलमोस्ट द सेम कोड एज सौरभ, लेकिन मैंने पावर वगैरह यूज किया है एंड मेरे को 32 सेकंड्स लग रहे थे उसके अंदर। आई थिंक It's okay, 10⁸ में तो उसका फर्क पड़ता है पावर एंड x स्क्वायर का? नहीं नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सेम ही चीज है। वो एक्स स्क्वायर लिख दो, x रेज़ टू पावर t लिख दो, x इंटू x लिख दो, ये वाले ऑपरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये स्केलर ही है ना, ये तो नंबर है। वेक्टर्स में फर्क पड़ता है थोड़ा बहुत उन कमांड्स का, बट वो बहुत माइन्यूट होता है, राइट। ये सब चीजें मेरा ध्यान इसलिए जाता है बिकॉज मेरा खुद का प्रोग्राम टेक्स 24 आवर्स टू रन, तो मुझे ऑप्टिमाइज करना होता है उसको बहुत ज्यादा। सो आई टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, बट दीज आर वेरी स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स, तो आप नहीं भी उसको करोगे तो इट्स ओके, इट्स फाइन। बट यही तो फिर फर्क होता है ना, यू शुड लुक एट ऑलवेज गिव अ बेटर कोड एंड ऑप्टिमाइजिंग द कोड इन टर्म्स ऑफ टाइम। एनीवेज दिस इज डन। अगर किसी का नहीं हुआ है यू कैन आस्क मी। सौरभ, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्क्रीन, यू कैन स्टॉप शेयरिंग। Anybody else who hasn't got the answer yet? Whatever pi you are getting, obviously वो आपको देख के पता चल जाएगा that whether you are getting it nearly to the actual value of pi or you are getting it very far away. So let me show you this file. कहाँ गया? एक मिनट। You know, this is the file which I have created. Let me share screen. You can see this animation. Yes, ma'am. कहाँ पे आता है? रोज देखते हो लेक्चर की स्टार्टिंग में एनिमेशन। मैम ये जो हमने अभी किया है वही है? हाँ, nobody noticed this? ये एनिमेशन कहाँ पे आता है? लेक्चर की वो स्लाइड में आता है। मैंने टाइटल स्लाइड पे लगाया हुआ है ये। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, तो ये वही है जो भी आपने किया है। सो यू कैन सी आपने जो रैंडम नंबर्स जनरेट करा के अगर हम उसको प्लॉट कराएं और एक मूवी की फॉर्म में उसको रन करेंगे, सो दिस इज काइंड ऑफ द लाइव सिमुलेशन। वो दिख जाता है कि आपके पॉइंट कहाँ कहाँ जनरेट हो रहे हैं। तो जो ब्लू है वो इनसाइड द सर्कल है, तो रेड वाले जो आउटसाइड द सर्कल है वो बाद में पता चलती है डिस्टिंक्शन, जब बहुत ज्यादा पॉइंट्स हो जाते हैं। थोड़े पॉइंट्स पे हमें बाउंड्री नहीं नजर आती है सर्कल की, बट व्हेन द नंबर ऑफ पॉइंट्स बिकम लार्ज then you can start seeing a circular boundary there.
So this is just making the things more visual. आप अपनी simulation को visualize कराना चाहते हो. Exactly you want to, instead of looking at the numbers, you want to see where exactly the point is falling. So you can learn these things and do that. ये मैटलैब में कुछ कमांड्स होती है, मूवी मूवी की कमांड होती है, सो उससे क्रिएट हुआ है. यू कैन एक्सप्लोर दैट. जब आप करोगे ये किसी भी सिमुलेशन पे लगा सकते हो. दिस आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नोटिस्ड, बट बहुत सारे लोग वायरस प्रोपगेशन के रिजल्ट्स दिखाते हुए भी इस तरह की फिगर्स एनिमेशंस यूज करते हैं. हाउ द things are getting spreaded in a network or anything becoming viral in a network. So if the visual representations are shown in these forms, so they are actually coming from the simulation and then creating a GUI or the movie for that. Anyways, so that finishes our experiment of this. Now we'll be discussing your problems of the project. So we'll start one by one. Let me know where it is. अच्छा मैंने शेयर स्क्रीन किया हुआ है ना. Yeah, so ask me what's the problem you are facing in finalizing the problems for project. What कुछ तो आपने डिस्कस किया होगा, मैंने आपके ग्रुप्स बनाए हैं जिन लोगों के. और बिल्कुल भी आपने कुछ भी इनिशिएटिव नहीं लिया अपनी तरफ से. Nobody has searched anything or anybody who has at least some idea that on this problem they want to work. Ma'am, like I have compiled, like with my team, they have compiled a document where we have stored all the like relatable topics to stochastic optimization. Okay. If possible, I'll share it with you. You can, like, we are still the problem that we are facing is the finalizing of the final idea. So we wanted to use stochastic optimization as various techniques that can be employed. So one of them that we looked at was random walk. Yeah. So random walk techniques is used. So they are mostly used for algorithmic purposes and making them faster. Mm-hmm. So like I'll share the document. It will be easier. Yeah, you can share. Yeah, meanwhile, rest of the people can tell me their ideas. Yes, Ishani. Ronak, I and Aniket are doing it on financial problem, and we can compare the profit on from investments in various fields like shares, FDs, SIPs, mutual funds over a long run, and then conclude which is the best one, and at what time we should invest in which one. Okay, so how you will be comparing, like just by getting the data? Because Ma'am, that's what we are considering right now. In the sense, we are looking for ideas, and we are seeing if we are able to make a model out of it. Then we'll surely make it, because we're just finding the resources in the research papers and seeing what all has been done in this. yeah, that's fine. You can go ahead. राइट. सो ठीक है, ये तो चलो अभी आज हम डिस्कस कर रहे हैं, बट इसके बाद भी हम बिकॉज येट वी आर नॉट क्लियर एमएसटी कब हैं, कब खत्म होंगे, कब हम उसके बाद मिलेंगे. तो हम एक बार फिर से लाइक आफ्टर 2-3 वीक्स आज की डिस्कशन के बाद, मीन्स वंस योर प्रॉब्लम गेट्स फाइनलाइज्ड, तो हम बीच में एक टाइम जरूर रखेंगे सो दैट वी कैन हैव द प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, ताकि मुझे डायरेक्शन पता चले कि जो आप लोग कर रहे हो वो सही कर रहे हो या कितना कर रहे हो, कम कर रहे हो कि ज्यादा कर रहे हो. सो उस डिस्कशन के लिए वो हम करेंगे. सो दैट्स व्हाई we will definitely discuss them, but for today we have to at least finalize the problems. Ma'am, one more thing. Yes, Ishangi. Yes. Ma'am, we got a mail that we have the MSTs in the second week of October. So, ma'am, that will be from 12th or 5th, like it's midway. When did you get this mail? Ma'am, 2 days back, like it is Friday. We got it on Wednesday.
I think I don't know. We have not got any formal information because obviously वो administration students को हमेशा पहले inform करते हैं because आप लोगों ने पढ़ना है, prepare करना है. So I think it will be from 12th. जो सुना है, I cannot again assure you because we have not get any formal information yet. But 12th ही सुना है अभी तक तो हमने. तो हमने भी यही सुना था, हम 12th से Yes, होंगे, from 12th नाम ही मेरे को हमने पता यही था. सुना है. जो भी 12th ही होगा हमको पता है. they'll finalize in a few days. But वही है कि वो ये भी हो सकता है ना, देखो आपको पता तो है कि 5th नहीं तो 12th को तो होना ही है, और आपको टेंटेटिव सिलेबस भी अभी तक पता है कि 12 सितंबर तक का तो है ही है. So rather than waiting for the exam exactly to be announced, so you start preparing for MSc. Yes, ma'am. एंड मैम आपने हमें अभी 2-3 टॉपिक्स के दिए हैं ना क्वेश्चंस, वो जो बीच के टॉपिक्स हैं वो SIR मॉडल एंड स्केलिंग एंड जो डायमेंशंस एंड वो सारे टॉपिक्स रहते हैं, हम प्लीज उनके भी दे देना. स्केलिंग के क्वेश्चंस हैं फर्स्ट में ही है, स्केलिंग के भी फर्स्ट असाइनमेंट में ही है, और डायमेंशनल एनालिसिस के भी फर्स्ट असाइनमेंट में है. SIR मॉडल के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको क्योंकि वो तो वो है ही लैब में करने वाला, उसको तो हम इक्वेशन को एज सच सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं. तो SIR मॉडल का कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा. तो मैम पेपर में हमें बस डिराइव करने को आ सकता है. हाँ, मीन्स जो पार्ट अब थियोरी में इतना कुछ डिस्कस किया है, सो एनीथिंग कैन बी देयर, बट जो लैब में ही है तो वो लैब में ही होगा. तो यू कैन एंटिसिपेट अकॉर्डिंग टू दैट. Whatever we are doing in theory is doable in theory, so that can obviously come in paper. Yeah, so let's not divert the discussion. So coming back to this, so Ishage, yeah, I'm fine with that. So you can just list it the same in the Google spreadsheet which I have shared, so and keep working on this, and then let me know in the meanwhile. आपको बीच में कभी भी doubt आता है तो any one of you can ask me that we are getting stuck at this point. मैम आई डोंट नो हाउ टू सर्च फॉर रिसर्च पेपर्स, आप अगर थोड़ा सा भी वो गाइड कर दो तो हम फिर ढूंढ लेंगे. हाँ, मैंने आपको वैसे पहले भी बताया था, चलो मैं फिर से बता देती हूँ. दिस इज फॉर एवरीवन. इफ यू जस्ट go to Google Scholar, so you just need to write this scholar.google.com. आप डायरेक्टली गूगल पे लिखोगे तो भी आ जाता है वैसे तो, बट हेयर डायरेक्टली मींस स्कॉलर पे पता है कि सीधा आपको रिसर्च पेपर के ही लिंक्स मिलेंगे. गूगल पे लिखने से बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें मिल जाती हैं, कई बार बुक्स मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगे, बट they are not research papers. But directly on Google Scholar you will get the research papers. So whatever you want to search, just type in the search bar. Say you want to compare, so Ishangi, what do you want to compare? The profits, right? The profits of in the Say financial market. I write comparison of profits in uh, finance, financial instruments लिखो या investments लिखो, whatever it means, आपको कुछ roughly तो लिखना ही पड़ेगा to get a start. So you can see these are the papers. So यहाँ से आप टाइमलाइन चेंज कर सकते हो सिंस 2020. आप बहुत रीसेंट पेपर देखना चाहते हो तो यू विल क्लिक ऑन सिंस 2020, तो आपको बिल्कुल नए पेपर्स मिलेंगे. बट डू नॉट गो फॉर द वेरी न्यू पेपर्स बिकॉज वो आपको समझने के लिए फिर बहुत ज्यादा बैक पढ़ना पड़ेगा. उन पेपर्स की टाइप पे डिपेंड करता है, बट फिर उसका लिटरेचर उतना ही ज्यादा पढ़ना पड़ेगा. सो यू कैन चूज अ मिड रेंज, से वी चूज सिंस 2016. And then like here you can see the first paper, comparison of risk management in non-profit banks and financial institutions versus other conventional banks in Iran. तो जैसे ये एक particular country पे focus है, so if you want to make your refinement in the search, so you can type, means if you want to do it in country wise, say in India. So this is a paper you're getting, assessing the impact of financial crisis on the profit efficiency, comparison and analysis of profitability of top 3 Indian private sector banks. So वही इसमें ज़्यादा आपको banks का मिलेगा. As you can see, financial in British India from equity ये stock exchange पे मिलेगा आपको. So means you have to really search a lot to exactly what you want to get.
if you do not want to type this much general, so comparison of profits in various um, uh, what should I write? Various stocks. तो ये आपको स्टॉक्स में भी कंपैरिजन मिल जाएगा. स्टॉक्स में भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. देयर आर फ्यूचर्स, देयर आर ऑप्शंस, देयर आर डेरिवेटिव्स. मींस futures and options both are derivatives. So equity is there. So depending on what you are looking for, आपको यहाँ पे उतना accurate, उतना precise लिखना पड़ेगा so that you can get at least some starting point, right? अब कंपैरिजन मत लिखो. सपोज किसी ने कंपैरिजन नहीं किया है तो यू वांट टू से सर्च इफेक्टिव और आई गॉट इवन एन आर्टिकल लाइक दैट. अभी मुझे मिल नहीं रहा है बट मेरे पास शायद सेव भी हो. उसमें मैंने ये पढ़ा था दैट हाउ द स्टॉक्स आर गोइंग टू बी बेटर देन आवर स्टॉक्स, बेटर for financial planning. So something was this kind of article was there. मैम मैं यूट्यूब पे आपके लेक्चर्स देख रही थी, उसके अंदर 26th and 27th या पता नहीं लास्ट 2-3 लेक्चर्स फाइनेंशियल पे थे. मैम उसको पढ़ने सुनने से हमें हेल्प मिलेगी इसके रिगार्डिंग? एक्चुअली मैंने वही सोचा था कि अभी ये टॉपिक जैसे ही खत्म होगा, जैसे आज हमारा वो खत्म हो गया है क्लासिफिकेशन, तो यूजुअली पिछली बार भी मैंने फाइनेंस पहले ही पढ़ाया था, पहले ही पढ़ा दिया था. अभी मैंने उसको एज पर द ऑर्डर ऑफ सिलेबस रखा था तो वो लास्ट में है. बट इफ यू वांट नेक्स्ट वीक से वी कैन स्टार्ट दिस फाइनेंस थिंग. एटलीस्ट यू विल हैव सम बेसिक आइडिया अबाउट इट. हाँ जी मैम, हेल्प हो जाएगी. हाँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू हैव ऑप्टेड फॉर दिस एज अ प्रोजेक्ट टॉपिक, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा दैट एग्जैक्टली आपको थोड़ा सा बेटर हेल्प मिल जाएगा उसमें. तो फ्रॉम नेक्स्ट 2 लेक्चर्स उसके बाद तो शायद आई थिंक अगर रीडिंग वीक हुआ तो जो भी होगा विल सी, बट नेक्स्ट वीक हम एक्चुअल में फाइनेंस ही स्टार्ट करने वाले हैं. बिकॉज मैंने आपको आज बताया था कि हमारी थियोरी खत्म हो गई, इसके बाद हमें सिर्फ मॉडल्स पढ़ने हैं अलग अलग. तो आप फाइनेंस वाला मॉडल पहले पढ़ना चाहते हो क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, वो और किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो उसको हम पहले पढ़ सकते हैं. Ma'am, हाँ, यस okay. Ma'am, it's up enough. हाँ. Who want to ask first? Guneet. Ma'am, अब मैम अभिनव पूछ ले पहले, कोई नहीं, I'll ask later. Okay, Abhinav, you will be asking first. yes ma'am, हमारा भी फाइनेंशियल से ही था रिलेटेड. तो हम लोगों के पास एक तो था प्रिडिक्टिंग स्टॉक मार्केट Okay. और एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स पे था. Okay, derivatives is a very huge concept. Derivatives में again you have to be precise because derivatives में you have futures, options, forwards, swaps. तो बहुत सारे financial instruments होते हैं. तो मैम उसी से रिलेटेड पूछना था कि मैम उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं. उसमें देखो वही है, अब ये थोड़ा सा लिटरेचर सर्च करना पड़ेगा इसके लिए, तब हमें आइडिया होगा कि किस तरह का लोग इसमें रिसर्च करते हैं. देखो एक तो है, वन आइडिया इज आप टेक्निकल इंडिकेटर्स का कंपैरिजन कर सकते हो. you know, you have some idea about technical analysis. मैम मतलब Trading, you have some idea about trading? Anybody like you want to do because this financing is all related with the trading and investment in stocks. If you look at stocks or even futures, so there are many research areas like portfolio optimization. I think somebody of you wrote also that they want to work on portfolio optimization. So derivatives is also linked with that. So उसमें आपको कितना प्रायर नॉलेज है उस पर डिपेंड करेगा. बट ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट विद दिस फाइनेंस थिंग नेक्स्ट वीक. तो आपको थोड़ा और आइडिया मिल जाएगा इन सब टर्म्स का कि ये इन टर्म्स का मतलब क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है. देन यू कैन मेक अप योर माइंड बेटर. एंड आप मुझे अपने टेंटेटिव इंटरेस्ट बता दो. जैसे अभी आपने बताया डेरिवेटिव्स और वो है, तो
what I can do in the meanwhile, इसलिए मैंने आपको बोला था कि मुझे वो स्प्रेडशीट पे या ईमेल के थ्रू थोड़ा सा बता देना कि मैं पहले ही सर्च करके रखूंगी, बट आई डिडंट गेट मेल फ्रॉम एनीबडी, सो दैट्स व्हाई आई डिडंट डू दैट. So at least you do, all of you do that thing now. अभी तो चलो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, but if you want the literature, like I will search the research papers for you and provide you the papers, then you can start reading and doing that. So I can do that, but थोड़ा सा मुझे आपको बस नैरो डाउन तो बताना ही पड़ेगा, बिकॉज सबने फाइनेंशियली लिखा है, तो फाइनेंशियल में बहुत, इट्स अ वेरी बिग थिंग. तो आपको थोड़ा सा नैरो डाउन करना पड़ेगा. लाइक आई गॉट वन टॉपिक पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन, and I got another topic from them. They want to compare the efficiency of different instruments, different financial instruments. So I got 2 3 things to search so that I can provide you the papers. Is that fine? यस मैम, तो मैं आपको मेल कर दूंगा. हाँ, थोड़ा सा जैसे, चलो आपने बता ही दिया है डेरिवेटिव्स और अदर थिंग्स, सो आई और विल सर्च करता हूँ. हाँ, थोड़ा सा और आप इस पे सर्च कीजिए. Ma'am, can I share my screen now? Yes, yes, let me stop share. Is it visible? Yes. Ma'am, so we kind of compiled whatever we were like getting. So stochastic modeling में ma'am like 3-4 techniques थी that we can use. So actually like इसमें हमें artificial intelligence में बहुत ज़्यादा use हो रही है और हमारा like subject भी है. तो इसमें mostly algorithm में इसको like how fast we can make it, and like that is the main of one of the biggest approach जो कि stochastic optimization की use हो रही है computer science के field में. So तो मैम लाइक हम लोग क्योंकि थोड़ा एक्चुअली टेक्निक्स की नॉलेज इतनी नहीं है. एवरी टेक्निक्स लाइक देयर आर मेनी टेक्निक्स लाइक मेरे को याद है वन इज मार्को मॉडल ऑलरेडी रिटन, रैंडम वॉक थी एंड 2-3 और थी मैम, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम. तो लाइक वी वर थिंकिंग ऑन दिस ग्राउंड ओनली कि इफ वी कैन या ये रही लाइक ब्रांचिंग प्रोसेस और मार्कोव चेन पॉइजन प्रोसेस. तो लाइक हमें इतना आइडिया इसमें है नहीं, तो लाइक just wanted to know कि if you can just provide us a base like a particular topic that we can work on, because we are getting confused in that part. Like ये एक journal था. Can you see the stochastic? Yes, one Hind AWI1. Yeah. yes, I can. So ma'am, they would in this they were like many of the techniques were related to normal DA, like design algorithm and analysis. Yes, yes. Yeah. So we were thinking on this ground only ki if we can take up a topic related to this field. So you can say like this is one of the point that we are focusing on. So ma'am, if you can suggest some point, like if there is some recent research that we can take up or something like that, because it is quite huge. Like there's an improved hybrid genetic algorithm, and we are actually studying about genetic algorithm in artificial intelligence in our course only. So थोड़ा relatable भी था, so that's why I just wanted to take a guidance from you on this side कि like which one should we go for. Like there are many algorithms, that's why. So this is good idea because obviously ये देखो आपके उससे related भी है जो आप already study कर रहे हो, and regarding this Markov chain models and everything, ये भी हमारे कोर्स का वैसे पार्ट है, बट हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं. ये भी आएगा, जैसे अभी स्टोकेस्टिक शुरू हुआ है ना, रैंडम नंबर जनरेशन और ये सब शुरू हुआ है, तो उसके बाद यही आता है. बिकॉज जैसे मैंने अभी बोला हम फाइनेंशियल भी पढ़ेंगे, तो ये भी हमारे कोर्स का पार्ट है. बट आप रिसर्च करने के लिए यू कैन स्टार्ट, लाइक ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको थियरी चाहिए, क्योंकि उतना का थियरी तो आप पढ़ ही लोगे. और जैसे आप ऑलरेडी जेनेटिक एल्गोरिथम, सपोज यू आर टेलिंग मी यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, so yes ma'am, something related to that, like there are algorithms that are being discussed in AI. So मतलब like idea है कि what happens, what is the flow, but exactly किस field को उठाना चाहिए, that's the main issue. Like we don't know, like many things have been researched already, right? So that's why just wanted to see if we can take up something new and which can be completed as well. So that's why. Yeah, ठीक है. So I have got your points. I'll let you know some definite specific problem in that. So you can see that this stochastic ray tracing, it's written over it. It's the application of the Monte Carlo simulation to computer graphics. So obviously that's why I told you कि वो बहुत advanced level पे वो technique use होता है, और fundamental उसमें यही रहता है. So genetic algorithms हैं, we have
जेनेटिक प्रोग्रामिंग, बट एक्चुअल में क्या होता है जो आप शायद अपने कोर्सेज में पढ़ोगे, आई डोंट नो हाउ डू यू डू इट देयर, बट वहाँ पे डायरेक्टली डू यू डू प्रोग्रामिंग ऑफ दीज? No, ma'am, like हम खाली overview लेंगे, like mostly like this happens, like this is like we'll get a tree, जैसे कि working क्या है उसकी algorithm की, that's it, like बहुत overview, like not too much in detail, like अच्छा, it's मतलब उसमें आप लैब में इसको no ma'am, फॉर्म नहीं करते? इतना no ma'am, lab वाला work नहीं है, it's mostly like थोड़ा बहुत overview है कि how the algorithm works, not too much in detail but the important aspects of it. हाँ, बट तो आप लोगों ने न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ा हुआ है? Ma'am, like I don't know team members मेरे अभी शायद से है नहीं, but I have done work with the neural networks actually. I have like in my internship and all I have worked on this, so I have an idea of neural networks. चलो ठीक है, So so अब I'll give you some problem. I'll give actually, yeah, ma'am. Just last word, like since this stochastic optimization is quite related to computer science, like it's like really getting related to all the machine learning and deep learning part. So yeah, might be if we are able to find something related to that, might like not too much extreme that we are not able to do that, but yeah, up to some level, then we can try that. yeah, okay, fine. I'll share this document, ma'am. Actually, हम नहीं बनाया हुआ है, तो I'll share this on email if you want. Okay, okay, yeah, definitely. Thank you. Okay, You ma'am. sharing this with me. That will Sure. be great. Yes, one more message I got from Saurabh. Your team topic is portfolio optimization. So, okay, I have got your choice also. So, I'll give you the paper for that. For if you have already searched, you can tell me. If haven't, then I will do that. Saurabh, are you there? Yeah, Saurabh, you can unmute and let me know if you can unmute yourself. Acha, sorry. Yeah, it's fine. You can write in the chat box. Yeah, anybody else wants to ask anything? Sumit? यस मैम, मेरा भी वही टॉपिक था, वो ग्रुप चेंज हो गए थे ना, तो आप किसके साथ हो? कौन से ग्रुप में हो? पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन मैम, यही सौरभ वाला। सौरभ वाले ग्रुप में हो, ठीक है। आप कुछ बताना चाहते हो तो यू कैन लेट मी नो। मैम अभी वो सर्च ही नहीं किया, अभी रिसर्च पेपर मैंने ढूंढा पर अभी इतना मिला नहीं। ठीक है, चलो, आई विल गिव ऑल ऑफ यू सम लिटरेचर। मैंने लास्ट टाइम भी एक्चुअली उनको प्रोवाइड किया था, स्टूडेंट्स को पेपर्स मैंने ही उनको दिए थे रादर, क्योंकि लास्ट टाइम यही हुआ था, हमने स्टार्ट बहुत लेट किया था, तो आई डिडंट वांट कि स्टूडेंट्स का टाइम ज़्यादा लिटरेचर सर्च में चला जाए, तो इसलिए मैंने ही ढूंढ के दिए थे। बट आई विल डू द सेम थिंग दिस टाइम ऑल्सो, बट यू नीड टू गिव मी सम टाइम. These coming 3 to 4 days I am very busy, so after that I'll be able to do something. Meanwhile, you can share your inputs and ideas, or you get some paper and you want to ask that whether this is suitable to go for, then all of those discussions you can do anytime, any point of time. Well, we can mail you a collection of research papers, whatever we find, like Yes, yes, at the end of the week, something like that. yes, yes. Okay. Yeah, so just make it a yeah, email will be fine. Yeah, because papers होते हैं, so better to email rather than sharing on WhatsApp. But we have to actively, actually यही वाला step difficult होता है, पहला step रिसर्च का, कि आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना नहीं हो रहा होता है कि प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करें. So once problem is identified, and then obviously फिर then you keep your mind कि अब इसको ही पढ़ना है, वो बाद में आता है कि अब पढ़ना कैसे है, how to read a research paper, वो बाद की बात आती है. But first thing is you have to very much finalize the problem on which you want to work on. और ऐसा भी हो सकता है हमें एक पेपर से नहीं समझ आए, फिर हमें दूसरे पेपर पे जाना पड़े. So क्योंकि that is how research is, एक बार में पेपर्स की लैंग्वेज से नहीं भी समझ आ रहा है, but we may need to look at the number of articles or the number of books or different sources to understand that. क्योंकि हमें इतना भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं चले जाना है कि हमें
बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज लेना पड़े कि कोई फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ही नया सीखना पड़े। कुछ तो नया आप सीखोगे, बट इतना ही कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं चूज करना है कि हमें उसके पहले वीडियो लेक्चर्स ढूंढने पड़े या उसको पहले समझना पड़े, बहुत ज़्यादा टाइम लगा। इसीलिए हमने जितना अभी तक सीखा है उतनी ही नॉलेज से हम जो सॉल्व कर पाए जिस तरह की प्रॉब्लम्स को, सो आई विल गिव यू दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। करने को तो बहुत कुछ है, बट यू विल स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम फॉर द टाइम बीइंग, you get interested and then later on you can extend your research to higher and broader levels. So कभी भी फर्स्ट टाइम पे हम नहीं टारगेट करते हैं कि हम बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम पे काम करेंगे, पहले हम सिंपल से ही स्टार्ट करेंगे। Yes, anybody else wants to ask anything? Meanwhile, I have shared all the lab recordings and all the lecture recordings, and so far जितने भी हमारे assignments हैं वो सब मैंने share कर दिया है। मैं एक वेबसाइट का लिंक भी शेयर करूंगी जिसपे सारा स्टडी मटेरियल पड़ा है। तो वो लास्ट ईयर की ही वेबसाइट है, तो आई विल शेयर दैट लिंक ऑन LMS ओनली। पहले मैंने सोचा था मैं शांगी को फॉरवर्ड करूंगी, बट आई विल शेयर डायरेक्टली द लिंक ऑन LMS सो एवरीबॉडी कैन सी फ्रॉम देयर ओनली। मैम प्लीज आप एक काम कर दो कि जो अभी वाले लेक्चर्स है ना हमारे लिनियराइजेशन और उसके बाद वाले, मैम प्लीज अभी मत अपलोड करना, MST के बाद अपलोड कर देना। वो फिर हम वहीं तक पढ़ेंगे। जैसे अभी 17 लेक्चर्स है ना, मैंने आई थिंक आज ही कर दिया अपलोड। कोई बात ओके कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। हाँ हाँ जी मैम। अच्छा, मैं कल पढ़ रही थी जैसे, तो वो कन्वीनियंट था कि ठीक है पता है इतने ही करने हैं। यस मैम, वो फिर एक्स्ट्रा लेक्चर्स आते हैं, फिर कंफ्यूजन होनी शुरू हो जाती है कि ये भी करना है, ये भी करना है, तो लाइक अच्छा उसको क्या करूँ फिर मैं? नहीं मैम उसका कुछ मत करो, हम ग्रुप में मैसेज एक डाल देंगे वो डिस्क्रिप्शन में कि इतने वो लेक्चर्स करने हैं। एग्जैक्टली जब हमारा एक सिलेबस की टर्म्स डिसाइड हो जाएंगी तो आई विल गिव एग्जैक्ट नंबर ऑफ लेक्चर्स यू हैव टू लुक एट, राइट? ओके मैम। अभी तक तो वो टेंटेटिव वही 17-18 वाला ही है, बट थोड़ा बहुत प्लस माइनस जो भी होगा, सो आई लेट यू नो। मैम हमारा कोई इवैल्यूएशन लाइक होगा, लाइक अभी है कुछ वैसा? हाँ एक्चुअली उसके लिए भी हम पहले कंडक्ट करने का सोच रहे थे, बट देन we got some instructions and that we have to wait for a while till the next week, मतलब Monday Tuesday तक कुछ information आएगा, then I'll let you know, क्योंकि they are trying regarding that quiz which we're trying to conduct, quiz 10 minutes quiz, so I'll let you know till Monday or Tuesday actually. मैम मतलब होना तो है मे बी प्लेटफॉर्म का या कैसे? हाँ या मैम, बट कब डेट टेंटेटिव कुछ आइडिया होगी? मैम क्योंकि ना हमारे बाकी भी होने हैं। हाँ, हमारे तो मैम बहुत सारे हो रहे टेंटेटिव मैं आपको बता देती हूँ, सो दैट विल बी कैन बी दिस नेक्स्ट फ्राइडे इवनिंग, यही हमारी लैब के बाद जो टाइम है। मैम उस अच्छा, वैसे तो मैम हॉलीडे उस दिन हॉलीडे है उस दिन? 2 अक्टूबर। अच्छा 2 अक्टूबर है, अच्छा नहीं लेट्स नॉट कीप इट दैट डे, ओके। मैम उस दिन रख लो मैम, आगे एक्सटेंड मत करो, बाकी मैम सब सैटरडे को रख देना मैम। नहीं मैम, मैम प्लीज मैम फ्राइडे को ही रख लो या थर्सडे रात को रख लो, हमको नो मैम, थर्सडे रात नहीं मैम। मैम नहीं फ्राइडे रख लो मैम प्लीज मैम, बाकी सब्जेक्ट्स वो होता है ना एक खत्म नहीं हुआ फिर दूसरे तक जाते नहीं है। मैम अगर मैम हुआ तो मैम या तो फ्राइडे या तो क्या कहते हैं सैटरडे मॉर्निंग या फिर फ्राइडे इवनिंग, बस। चलो ठीक है। यस मैम, उससे ज्यादा फिर मतलब लाइक उससे अर्ली मत करना मैम। ओके ओके, सो एनीबॉडी एल्स वांट्स टू आस्क एनीथिंग? तो मैंने आपको बता दिया, आप अपने जो भी आइडियाज हैं जो भी है मेल पे मुझे भेज दो, एंड मीनवाइल आई विल आल्सो अपलोड द रिलेटिव जो भी मुझे रिलेटेड मटेरियल मिलेगा, आपको बता दूंगी कि वेयर एग्जैक्टली आई एम प्रोवाइडिंग यू द रिसर्च पेपर्स, तो या आई विल डू दैट, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके। Yeah, actually I have another meeting simultaneously going on, so I'll just
because अभी हम कुछ कर नहीं रहे हैं, so I can just end this call. If you want to Okay. ask anything, then I can wait. मैम रिसर्च पेपर्स वो अगर हमें मिले तो we'll also send you some. Yeah, sure. Okay. Okay then. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.